and any devotee can read one paragraph. Okay, so it is very difficult to call by names. So, but still devotees can read one paragraph. So we will share the slide in English mainly. So like I will not call by name. So devotees can take this opportunity to read one paragraph. So it will be very good because our motto, we will read together, not like one person or one devotee. We will read together and we will understand. Okay. So let me share the screen. নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিনীতি নামে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশ তারিণে জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে Oh, my screen is visible now. Yes, bro. जी प्रभु जी। Okay, so this is the reference we have taken from Srimad Bhagavatam. In Srimad Bhagavatam introduction part, the life and teachings of Chaitanya Mahaprabhu is given. So in this is not full details, but still like many informations and Chaitanya Mahaprabhu's life teachings in briefly it is given. So our goal, like within for few weeks, 1 or 2 weeks, we will complete this portion. You can also read personally, no problem. And based on this, there will be one quiz and we will check like first 3 or first 5 winners. We will give attractive prize for them. Okay, so let's start. Anyone devotee, please start reading from the first like Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. एक एक डिवोटी करके आप लोग अनम्यूट करके पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, स्टार्ट कीजिए. हरे कृष्ण प्रभु. यस प्रभु, पढ़िए. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, the great apostle of love of God and the father of congregational chanting of the holy name of the Lord, advent himself at Sridham Mayapur, a quarter in the city of Navadip in Bengal, on the Falgun Purnima evening in the year 1407, Sakabda, corresponding to February 1486 by the Christian calendar. पढ़िए. His father, Sri Jagannath Mishra, a learned Brahmana from the district of Silhet, came to Navadip as a student because at that time Navadip was considered to be the center of education and culture. He domiciled on the banks of the Ganga after marrying Srimati Sachi Devi, a daughter of Srila Nilambara Chakravarti, the great learned scholar of Navadip. ओके, चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे जन्म लिए थे? सीधा मायापुर, that is in Navadip, Bengal, mainly 1486, and like according to our Bengal calendar 1407. ओके, फादर कौन थे? श्री जगन्नाथ मिश्र, मदर सुचि देवी. ओके, एंड सुचि देवी कौन थे? She was the daughter of Sri Nilambara Chakravarti, who was a big scholar. उसी टाइम में नवद्वीप में एक बड़ा स्कॉलर थे, नीलांबर चक्रवर्ती. Okay, so all of you have to also remember these informations. Next, any other devotee, please?
Jagannath Mishra had a number of daughters by his wife Srimati Sachidevi, and most of them expired at an early age. Two surviving sons, Sri Vishvarupa and Vishvambhara, became at last the object of their parental affection. The tenth and youngest son, who was named Vishambhara, later became known as Nimai Pandita, and then, after accepting the renounced order of life, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. पढ़िए. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu exhibited his transcendental activities for 48 years and then disappeared from this mortal world in the year 1455 Sakabda at Puri. पढ़िए. For his first 24 years, he remained at Navadvipa as a student and householder. His first wife was Srimati Lakshmi Priya, who died at an early age when the Lord was away from home. When he returned from East Bengal, he was requested by his mother to accept a second wife, and he agreed. His second wife was Srimati Vishnu Priya Devi, who bore the separation of the Lord throughout her life because the Lord took the order of sannyasa at the age of 24 when Srimati Vishnupriya was barely 16 years old. Okay. Thank you, Mataji. Next. कोई डिवोटी पढ़िए. Unfortunately, despite Lord Krishna's direct नहीं order, नहीं. From after taking sannyas. After taking sannyas. after taking sannyas, the Lord made his headquarters at Jagannath Puri due to the request of his mother Srimati Sachdevi. The Lord remained for 24 years at Puri. For 6 years of this time, he travelled continuously all over India and especially throughout southern India, preaching the Srimad Bhagavatam. Lord Chaitanya पढ़िए not पढ़िए. only preached Srimad Bhagavatam but propagated the teachings of Bhagavad Gita as well in the most practical way. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna is depicted as the absolute personality of Godhead, and his last teachings in a great book of transcendental knowledge instruct that one should give up all the modes of religious activities and accept him, Lord Sri Krishna, as the only worshipable Lord. The Lord then assured that all his devotees would be protected from all sorts of sinful acts and that for them there would be no cause of anxiety. Okay. Thank you. What is your name? Subham Mohanty. Okay. Very nice. So like here, Chaitanya Mahaprabhu, like Lord not only preached the Srimad Bhagavatam but also propagated teachings of Bhagavad Gita. चैतन्य महाप्रभु भगवत गीता भागवतम का नॉलेज सबको डिस्ट्रीब्यूट किया और सबको सिखाए कि ये ओनली कृष्णा लॉर्ड कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. ओके. नेक्स्ट. और कोई एक जन पढ़िए. Unfortunately, despite Lord Sri Krishna's direct order and the teachings of the Bhagavad Gita, less intelligent people misunderstand him to be nothing but a great historical personality, and thus they cannot accept him as the original personality of Godhead. हाँ, Such 1 many मिनट पॉज. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान खुद कृष्णा खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आए थे. ओके. और भगवान खुद भगवत गीता का नॉलेज दिए थे. बट ड्यू टू आवर इग्नोरेंस कुछ कुछ टाइम में हम लोग सोचते हैं कि ये सब हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है. कृष्णा ऑल्सो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, चैतन्य महाप्रभु ऑल्सो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी. समटाइम्स वी आर थिंकिंग कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ये सब जो थे सब एक एक ह्यूमन थे. तो ये हम लोग गलत करते बिकॉज ड्यू टू आवर पुअर नॉलेज. तो इसीलिए हम लोगों को भगवान के बारे में जानना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना चाहिए कि they were not ordinary person. भगवान लॉर्ड श्री कृष्ण he is the supreme personality of Godhead और चैतन्य महाप्रभु is the avatar. So that knowledge we should have.
Okay, Mataji, continue. Such men with a poor fund of knowledge are misled by many non-devotees. Thus, the teachings of the Bhagavad Gita were misinterpreted even by great scholars. After the disappearance of Lord Krishna, there were hundreds of commentaries on the Bhagavad Gita by many erudite scholars, and also every one of them was motivated by self-interest. पढ़िए. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the self same Lord Krishna. This time, however, he appeared as a great devotee of the Lord in order to preach to the people in general, as well as to religionists and philosophers. But the transcendental position of Sri Krishna Okay, 1 minute. primarily- तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं, चैतन्य महाप्रभु कोई अलग कोई आदमी नहीं थे. तो ये हम लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास चैतन्य महाप्रभु के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए हम लोग इसी जगह में गलती करते. कुछ कुछ टाइम में लाइक हिस्टोरियंस दे आर टेलिंग कि चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा आदमी था, देखने में बहुत सुंदर था, बट नॉट लाइक दैट. हियर श्रील प्रभुपाद इज आल्सो टेलिंग कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु इज द सेल्फ सेम लॉर्ड कृष्णा. तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आए थे? चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे एक भक्त का रूप में, ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड, क्योंकि हम लोगों को सिखाने के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए कि कैसे हम लोग भगवान का सेवा करेंगे, धर्म के बारे में, फिलोसॉफी के बारे में, और भगवान का जो पोजीशन उसके बारे में हम लोग को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए थे. पढ़िए माता जी. माता जी कंटिन्यू कीजिए. हरि बोल. और कोई पढ़िए. Actually, Hare Krishna Prabhu. हाँ पढ़िए. Where to start? I just अच्छा माता जी है, आशा माता जी पढ़ रहे थे ना? जी जी प्रभु जी, पढ़िए थोड़ा माता जी. स्क्रीन चला गया था, ठीक है. हाँ. The essence of essence. it is हाँ. that Lord Sri Krishna, who appeared at Brajabhumi, Vrindavan, as the son of the king Braja Nanda Maharaj, is the supreme personality of Godhead and is therefore worshipable by all. Vrindavan Dham is non-different from the Lord because the name, fame, form, and place where the Lord manifests Himself are all identical with the Lord as absolute knowledge. Therefore, Vrindavan Dham is as worshipable as the Lord. The highest form of transcendental worship of the Lord was exhibited by the damsels of Brajabhumi in the form of pure affection for the Lord, and Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu recommends this process as the most excellent mode of worship. He accepts the Srimad Bhagavad Purana as the spotless literature for understanding the Lord. He preaches that the ultimate goal of life for all human beings is to attain the stage of prema or love for God. ओके, थैंक यू माता जी. चैतन्य महाप्रभु खुद सबको सिखाए कि कैसे हम लोग कृष्ण प्रेम कैसे हम लोग को मिल सकता है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके पढ़िए. नेक्स्ट पढ़िए. Prabhuji, I will start from many devotees. यस यस माता जी. Many devotees of Lord Chaitanya, like Srila Vrindavana Das Thakur, Sri Lochana Das Thakur, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, Sri Kavi अभी कर्णपुरा, Kavi Kannapura, Sri प्रबोधानंद सरस्वती, श्रील रूप Prabodhananda गोस्वामी, श्री Saraswati, सनातन गोस्वामी, Sri Rupa रघुनाथ Goswami, भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल Sanatana भट्ट गोस्वामी, Sri Raghurathan रघुनाथ दास गोस्वामी. ओके, ऑल दीस आर बिग बिग आचार्य. तो जो यहाँ पे जो नाम है, यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, दे हैव रिटन लाइक चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, then कवि कर्णपुरा, प्रबोधानंद सरस्वती, दे आर बिग बिग स्कॉलर एसोसिएटेड चैतन्य महाप्रभु. तो जो 6 गोस्वामी है,
श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। अच्छा करके आप लोग नोट कर लीजिए, ऑल दिस थिंग्स प्लीज नोट इट डाउन। एक्चुअली ये सब हम लोग को अच्छा करके जानना चाहिए। जो सौरव गोस्वामी हम लोग बोलते, जो चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को भेजे थे वृंदावन में, वृंदावन का डिफरेंट प्लेस रिवील करने के लिए, तो सौरव गोस्वामी कौन है? जो अल्टर में आप लोग देखेंगे छोटा छोटा कोपिन टाइप पहन के, जो 6 गोस्वामीज है, तो 6 गोस्वामी है रूप गोस्वामी नंबर 1, 2 सनातन गोस्वामी, नंबर 3 रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, नंबर 4 जीव गोस्वामी, नंबर 5 गोपाल भट्ट गोस्वामी, एंड नंबर 6 रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, Srijivo Gopal Bhatto Das Raghunath. So this is one important line, one poetry by which we can remember these 6 names of 6 Goswamis. So they were like the pioneer of our this like Gauriya Vaishnava Sampradaya. Okay, Mataji, continue. And in And- this letter. And in this latter age, within 200 years, Sri Vivashananda Chakravarti, Sri Valadeva Vidya Bhushan, Sri Shyamananda Goswami, Sri Narottama Das Thakur, Sri Bhakti Vinod Thakur, and at last Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, our spiritual master, and many other great and renowned scholars and devotees of the Lord have prepared voluminous books and literatures on the life and precepts of the Lord. Okay, Such 1 minute literature Mataji. तो लाइक ये जो 6 गोस्वामी तक हम लोग डिस्कस किए थे, सो लाइक दे वर एसोसिएट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। जो हम लोग जो नाम अभी डिस्कस कर रहे थे, वृंदावन दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, सौरव गोस्वामी, सो दे वर प्रेजेंट व्हेन चैतन्य महाप्रभु वाज देयर। तो इन लोग सब चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएट थे। अभी चैतन्य महाप्रभु का अप्रकट होने के बाद, उसके बाद भी जो सब बड़ा बड़ा आचार्य थे, जो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो सब फेमस आचार्य, फेमस मतलब ऐसा नहीं कि उन लोगों को बहुत पैसा था, उन लोग बहुत अमीर आदमी थे, नो, फेमस मीन्स दे वर बिग स्कॉलर एंड दे वर प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो प्रभुपाद उनका जो गीता का जो पर्पट है, प्रभुपाद उसको फॉलो किए। बलदेव विद्याभूषण, दे आर बिग स्कॉलर। श्यामानंद गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, जिसका आप लोग इतना सुंदर सुंदर भजन सुनते हैं, जैसे एक बहुत सुंदर भजन है वृंदावन रम्य स्थान। तो लाइक देयर आर मेनी भजन्स रिटेन बाय नरोत्तम दास ठाकुर। तो लाइक दे वर very famous acharya, those who have established this Krishna consciousness movement, like their dedication, their contribution, like these are big things for our society. And then came Bhakti Vinod Thakur. Bhakti Vinod Thakur कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर थे भक्ति सिद्धांत और सरस्वती ठाकुर, तो श्रील प्रभुपाद का गुरुदेव, उनका जो पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर। अगर आप लोग मायापुर जाएंगे तो मायापुर में आप लोग देख सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर का वहां पे घर है, और जहाँ पे भजन करते थे, समाधि इवन पुरी में भी है। पुरी में हम लोग जब पुरी मंदिर जाते हैं, उसके सामने जो एक चैतन्य गौड़ीय मठ, so like that was the place of Bhakti Vinod Thakur. Bhakti Vinod Thakur was like district magistrate at that time, and उनका ही जो बेटा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कौन थे? वो हमारे श्रील प्रभुपाद का गुरुदेव, the spiritual master of Srila Prabhupada. So that's why we should know about all these acharyas, because when we can read the lives and teachings of different acharyas, so then we will get various types of nourishment. कि उन लोग कितना कष्ट किए, कितना कष्ट उठाया हमारे सोसाइटी के लिए, और उन लोग कितना बड़ा बड़ा स्कॉलर थे। ओके, नेक्स्ट, such literature. Such literatures are all based on the Shastras like the Vedas, Puranas, Upanishads, Ramayana, Mahabharata, and other histories and authentic literatures approved by the recognized acharyas. They are unique in composition and unrivaled in presentation, and they are full of transcendental knowledge. Unfortunately, the people of the world are still ignorant of them, but when these literatures, which are mostly in Sanskrit and Bengali,
come to light the world, and when they are presented before thinking people, then India's glory and the message of love will overflow this morbid world, which is vainly searching after peace and prosperity by various illusory methods not approved by the acharyas in the chain of disciplined succession. ओके नेक्स्ट, और कोई डिवोटी पढ़िए, कोई डिवोटी पढ़िए, एनीवन प्लीज रीड। Hare Krishna Prabhuji. हाँ पढ़िए। The readers of the small description of the life and prospects of Lord Chaitanya will profit much to go through the books of Srila Vrindavan Das Thakur, Sri Chaitanya Bhagavata, and Srila कृष्णदास कविराज गोस्वामी, Krishna Das Kaviraj Goswami, Sri चैतन्य Chaitanya चरितामृत, Charitram. The early life of the Lord, most fascinatingly expressed by the author of Chaitanya Bhagavata, and as far as the teachings are concerned, they are more vividly explained in the Chaitanya Charitra. Sorry, चैतन्य Chaitanya चरितामृत। Charitramrita. Now they are available to the English speaking public in our teaching of Lord Chaitanya. ओके तो मैं जस्ट 2 मिनट पॉज दे रहा हूँ। तो लाइक आप लोग नोट कर सकते हैं, जैसे हमारे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है। भागवतम क्या है? भागवतम में है भगवान के डिफरेंट पास टाइम्स, भगवान का लाइफ्स और डिफरेंट डिवोटीज पास टाइम। तो ऐसे भी चैतन्य चरितामृत एक है जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे है, चैतन्य चरितामृत, जहाँ पे आदि मध्य एंड अंत 3 खंड में वो डिवाइडेड है। चैतन्य महाप्रभु के डिफरेंट फिलोसॉफी, उनका टीचिंग्स, उनका लीला वहां पे वर्णन है। दैट इज कॉल्ड चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु टीचिंग्स एंड लाइक हिज लाइफस्टाइल आल्सो। और वृंदावन दास ठाकुर जो लिखे, जिसको बोलते हैं कि इनकारनेशन ऑफ व्यासदेव, तो ही रोट श्री चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत में क्या है? चैतन्य भागवत में है चैतन्य महाप्रभु का बहुत नेक्टेरियन लीला, दैट इज वेरी वेरी नेक्टेरियन। दैट इज आल्सो डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। वन इज लाइक आदि मध्य अंत लीला, ओके, बट दैट इज like very nectarian. Okay, so that should be noted. One is Chaitanya Bhagavat, one is Chaitanya Charitamrita. Okay, Mataji. Okay. The Lord's early life was recorded by one of his chief devotees and contemporaries, namely Srila Murari Gupta, a medical practitioner of that time, and the latter part of the life of Sri Chaitanya Mahaprabhu was recorded by his private secretary, Sri Damodar Goswami, or Srila Swarupa Damodara, who was practically a constant companion of the Lord at Puri. These 2 devotees recorded practically all the incidents of the Lord activities, and later on all the books dealing with the Lord which are ever mentioned were composed on the basis of Kadaka's notebook by Srila Damodara Goswami and Murari Gupta. Okay. So like यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अर्ली लाइफ, चैतन्य महाप्रभु का जो अर्ली लाइफ, मतलब चैतन्य महाप्रभु का बचपन का जो लीला है, तो मेनली मुरारी गुप्त कौन थे? मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट थे, और ही वाज अ डॉक्टर एक्चुअली। मुरारी गुप्त नवद्वीप में अगर आप लोग जाएंगे कोई मायापुर, तो मुरारी गुप्त सिपाट, और मुरारी गुप्त राम भक्त थे। तो शास्त्र में बोलते हैं कि कृष्ण लीला में जो जिस हिसाब से थे, चैतन्य लीला में भी उन लोग सब अवतार होके आए हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, कृष्ण लीला में जो जिस पोजीशन में थे, चैतन्य लीला में भी
भगवान जब अवतार होते हैं तो भगवान उनका सब एसोसिएट को लेके ही अवतार होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान अकेले आ जाता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण, बलराम जी आए थे नित्यानंद प्रभु का रूप में। उसके बाद गदाधर गदाधर आए थे श्रीमती राधा रानी का इनकारनेशन के रूप में। तो ऐसा करके जैसे अद्वैत आचार्य वो आए थे सदाशिव और महाविष्णु का अवतार रूप में। तो ऐसा करके हर एक जो चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएट है, दे आर ऑल्सो द इनकारनेशन ऑफ डिफरेंट पर्सनालिटी इन कृष्ण लीला। जैसे कृष्ण लीला में जो कॉन्ग्स थे, द कॉन्ग्स, वो कॉन्ग्स भी चैतन्य लीला में आए थे। तो मायापुर में एक प्लेस है चाँद का जी, तो चाँद का जी जैसे कृष्ण लीला में कॉन्ग्स थे, यहाँ पे भी वो चाँद का जी थे। तो लाइक दैट मीन्स लाइक कृष्ण लीला में जो हम लोग देख पाएंगे डिफरेंट एसोसिएट्स ऑफ कृष्ण, दे आर ऑल्सो इन दिस लाइक कृष्ण लीला। तो यहाँ पे जो मुरारी गुप्त, ही वॉज द इनकारनेशन ऑफ हनुमान। रामलीला में जो हनुमान थे तो उसका इनकारनेशन है, ठीक है। तो स्वरूप दामोदर, एक है दामोदर गोस्वामी और एक है स्वरूप दामोदर, लाइक दे वर वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। जिन लोग चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में आए थे तो उसी टाइम में उन लोगों के पास से ये इंफॉर्मेशन मिला था, मतलब दे हैव रिकॉर्डेड ऑल दिस इंफॉर्मेशन। और भी बहुत सारा है जैसे कॉर्चा नोटबुक्स, ओके, और श्रील दामोदर गोस्वामी, मुरारी गुप्त, उन लोग भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किए ये सब मतलब रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, सो नाउ वी विल एंटर like the लीला, we will enter into the main लीला, like the childhood लीला, कैसे चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए थे और उसी टाइम में ये पृथ्वी में क्या सिचुएशन था, हम लोग अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। कोई एक जन डिवोटी पढ़िए। So the Lord advented him. Hare Krishna Prabhuji. यस प्रभु, हरे कृष्ण। So the Lord advented himself on the Falguni Purnima evening of 1400 Sakabda, and it was by the will of the Lord that there was a lunar eclipse on that evening. During the hours of eclipse, it was custom of the Hindu public to take a bath in the Ganga river or any other sacred river and chant the Vedic mantras for purification. When Lord Chaitanya was born during the lunar eclipse, all India was roaring with the holy sound of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. These 16 names of the Lord are mentioned in many Puranas and Upanishads, and they are described as the Taraka Brahma Nam of this age. It is recommended in the Shastras that offenseless chanting of these holy names of the Lord can deliver a fallen soul from material bondage. There are innumerable names of the Lord both in India and outside, and all of them are equally good because all of them indicate the Supreme Personality of Godhead. But because these 16 are especially recommended for this age, people should take advantage of them and follow the path of the great Acharyas who attained success by practicing the rules of the Shastras. ओके प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए थे, फाल्गुनी पूर्णिमा था, तो अभी वो दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है। मार्च महीना में एग्जैक्टली डेट आई थिंक 25th मार्च। तो अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो लाइक 25th मार्च चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए थे, मतलब इसी साल में 25th मार्च, दैट वाज नॉट लाइक 25th मार्च, दैट वाज तिथि। क्योंकि जब कोई आचार्य जब भगवान जन्म लेते हैं, हम लोग तिथि का हिसाब से सेलिब्रेट करते, जैसे हम लोग जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं डे हिसाब से, बट इन दैट वी आर नॉट फॉलोइंग दैट डेज, वी आर फॉलोइंग द तिथिज। सो लाइक फाल्गुनी पूर्णिमा, ओके, तो that was very auspicious day. Why it was auspicious? Because like when Chaitanya Mahaprabhu took birth, at that time it was lunar eclipse, मतलब चंद्र ग्रहण चल रहा था, okay, and when lunar eclipse was there, so at that time normally हमारे कल्चर में क्या है, like जो जब ग्रहण होता है हम लोग सब गंगा में नहाते हैं, हम लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, we are like chanting different names,
भगवान का नाम लेते, हम लोग पूजा करते। तो उसी टाइम में ऐसा हुआ था कि लूनार इक्लिप्स के टाइम में चंद्र ग्रहण हो गया, तो सब हिंदू, इतना सारा हिंदू है, इन लोग सब भगवान का नाम चालू किए, जो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाम नाम हरे हरे। तो सब भगवान का नाम लेने लगा। और उसी टाइम में शास्त्र में अभी हम लोग और भी पढ़ेंगे, तो उसी टाइम में ऐसा भी है कि जो मुस्लिम लोग थे, तो मुस्लिम लोग भी क्या कर रहा था, दे आर ऑल्सो इमिटेटिंग, बोले देखो हिंदू लोग सब क्या, उन लोग सब हरि हरि बोल रहे, हरे कृष्ण बोल रहे। तो दे आर ऑल्सो इनडायरेक्टली चैंटिंग द नेम्स। पूरा गंगा में सब, गंगे में सब मतलब नहा रहा था। और नवद्वीप में अगर आप लोग कोई जाएंगे तो मायापुर में, तो सामने ही गंगा है, तो वहां पे सब नहा रहा था और सब भगवान का नाम कर रहा था। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कलियुग में दिस इज द मेन होली नेम वी शुड चैंट। देयर आर सो मेनी अदर नेम्स, बट ये जो 16 वर्ड्स, दीज आर वेरी स्पेशली रिकमेंडेड फॉर दिस कलियुग। तो हम लोग को यही नाम करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में और डिफरेंट आचार्य लोग इसके ऊपर ही रिकमेंड किए, ये नाम को ही रिकमेंड किए और कुछ नहीं। तो अभी इस टाइम में जब जोर जोर से सब हरिनाम कर रहा था, भगवान का नाम लिया था, तो उसी मोमेंट में, उसी ऑस्पिशियस मोमेंट में चैतन्य महाप्रभु जन्म लिए सुची माता का गोद में, और वो भी मायापुर धाम में। So that is the birth of Chaitanya Mahaprabhu. Okay, so from the next day we will continue from this part, the simultaneous occurrence. Okay, so all of you please remember, and like we are planning like once in a week we will do this book reading. If you are interested, we can